Hello, Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. In today's English class, we are going to start with our chapter number 4, which is extreme weather. Before start reading our chapter number 4, let us discuss words to know for. As the title extreme weather suggests itself that the whole chapter we are going to study about the weather and its conditions. Okay, now let's see words to know. Firstly, we have the word accumulate, means gather together, or you can say build up, means jama karna. Adversely means negative or harmful. Manfi तौर पर. Biome means a large natural occurring community of flora and fauna occupying a major habitat. Example, forest. You can say extended over a large area, or in Urdu you can say hayati khitta. Constitute means combine, to form. Content, to struggle, to overcome, or you can say gada karna. Devastation means great destruction or damage. In Urdu you can say tabahi. Drastic means over here extreme, shadid ya sakht. Drench means wet thoroughly, or soak means bhigana. Hostile means unfriendly, dushmani. Inaccessible, unable to reach. Nakable rasai. Leeward, the side that is sheltered from the wind. Hawa ki simt. Precipitation, rain, snow or hail that falls to, means barish. Thrive, grow or develop well, means तरक्की के मनाजिल तय करना. Venture means make a daring journey, जुर्रत करना. Now let's start reading with our chapter number 4, which is on page number 46. But before start reading, let us discuss some difficult words which are on page number 46. First we have cycles, means silsila. Variation means tabdili. Precipitation means barish. Dryness means over here khushki. Heat means garmi. Cold means sardi. Reliable, एतमाद. Consistent, बाअसूल. Destination, manazil. Content means capacity. Protecting means हिफाजत करना. Shielding means बचाना. Weather means मौसम का हाल. Now let's read paragraph number 1. Whether the weather be fine, or whether the weather be not. Whether the weather be cold, or whether the weather be hot. Well, whether the weather, whatever the weather, whether we like it or not. Each part of the planet has its own cycles and variations in temperature, precipitation, dryness, heat, and cold.
that constitute the weather in that area. In some places, the 4 seasons are easy to identify. In other, there is a sudden jump from winter to summer, or little variation throughout the year. There are destinations that have reliably consistent weather and other where the weather is changeable. Now let's translate the paragraph number 1 into Urdu. Each part of the planet has its own cycles. दुनिया का हर एक जगह, हर एक खित्ते का अलग निज़ाम या सिलसिला है. एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर, और उसके लिहाज से उसके टेम्परेचर में तब्दीली होती है. परसेप्शन जैसे कि बारिश, ड्राइनेस मीन्स खुश्की, हीट मीन्स गर्मी, एंड कोल्ड मीन्स सर्दी. दैट कंस्टिट्यूट द वेदर इन दैट एरिया, जो कि उस एरिया के वेदर को बनाता है या तश्कील करता है. इन सम प्लेसेस, और कुछ जगह, द 4 सीजन्स, चारों सीजन्स, आर ईजी टू आइडेंटिफाई, आसानी से पहचाने जाते हैं या उनका दौरानिया आसानी से पहचाना जाता है. इन अदर्स देयर इज़ अ सडन जंप, जबकि बाकी सब में एक सडन जंप यानी जल्द तब्दीली देखी जाती है. फ्रॉम विंटर टू समर, सर्दी से गर्मी में तब्दीली, और लिटिल वेरिएशन थ्रूआउट द ईयर, और हल्की फुल्की तब्दीली भी नज़र आती है. देयर आर डेस्टिनेशन दैट हैव रिलायबली कंसिस्टेंट वेदर एंड अदर वेयर द वेदर इज़ चेंजेबल. कुछ ऐसी मनाजिल भी हैं, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर बाअसूल यानी एक सीरियल में ही वेदर तब्दील होता है, जबकि कुछ जगहों पर वेदर अनचेंजेबल या चेंजेबल है, मीन्स वहाँ बहुत जल्द तब्दीली दिखाई देती है. If we read our paragraph number 2, that is, humans have to contend with heat, cold, rain, wind, storms, fog, humidity, and more. We have developed many ways of protecting and shielding ourselves from the weather and the conditions it creates, such as umbrellas, sunscreen, air conditioning, fans, heater, and thermal clothing, etc. Humans have content means इंसान के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी या सलाहियत होती है टू डील विद हीट, कोल्ड, रेन, विंड, स्टॉर्म, फॉग, ह्यूमिडिटी एंड मोर, जिससे वो सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार और सारे मौसम से उनको बर्दाश्त कर सकता है या निमट सकता है. वी हैव डेवलप मैनी वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग, इंसान ने अपनी हिफाजत के बहुत से तरीके ढूंढ लिए हैं. एंड शील्डिंग, अपने आप को बचाने के या अपने बचाव के. अवर सेल्फ फ्रॉम दी वेदर से बचने के लिए उनने तरीके ढूंढ लिए हैं. एंड द कंडीशन इट क्रिएट्स, और जो कंडीशंस, जो माहौल या जो गर्मी या सर्दी वो वेदर की चेंजेस से होती हैं, उससे बचने के लिए, जैसे कि सच एस अम्ब्रेलास यानी छतरियाँ, सनस्क्रीन, एयर कंडीशनिंग, फैंस यानी पंखे, हीटर्स, एंड थर्मल क्लोथिंग, जिससे आपको सर्दी गर्मी का अंदाज़ा नहीं होता. These and many other inventions, ये और कुछ ऐसी inventions means that people can explore and live comfortably, यानी कि वो दूसरे वेदर के अंदर भी survive कर सकते हैं on even the more hostile areas of the earth, और वो दुनिया में ऐसी जगह भी रह सकते हैं जहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा hostile means शदीद हो. However, despite the innumerable advancement in technology
जबकि हम अब इतने आगे इर्द गिर्द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं या बना चुके हैं, स्टिल द वेदर एंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर क्रिएट्स प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी इस मौसम और शदीद मौसम हमारे लिए परेशानी या परेशान कुन साबित होता है एंड हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन मैनकाइंड, और ये बहुत ही अपना सख्त या बहुत ही गहरा असर इंसान के ऊपर छोड़ता है। नाउ इफ वी सी द पैराग्राफ नंबर 3, that is, weather station have been set all over the world. They are used to measure temperature, rainfall, and other weather conditions. This data helps scientists to analyze, understand, and attempt to predict the weather. In some places, records have been kept for many years. However, in other places, the extreme conditions have made it almost impossible for scientists to set up or maintain recording equipment. Now, if we see the explanation of paragraph number 3, weather stations have been set up all over the world. जो वेदर स्टेशन, जो मौसम मालूम करने के लिए जो चीज़ें लगाई गई हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है पूरी दुनिया में, दे आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, रेनफॉल एंड अदर वेदर कंडीशंस जो कि वेदर की चेंजेस को बताती हैं। दिस डेटा हेल्प साइंटिस्ट, ये आसानी पैदा करता है साइंसदानों के लिए टू एनालाइज, अंडरस्टैंड, उनको ताकि पता लग सके, एंड अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द वेदर, ताकि वो आसानी से वेदर का पता लगा सकें। In some places, records have been kept for many years. However, in other places, the extreme weather condition, जबकि कुछ जगहों पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से, सख्त मौसम की वजह से, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिशें हो, you have made it almost impossible, जो कि नाकारा बना देती है, जिसकी वजह से for scientists to set up और maintain recording equipment, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उस जगह का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या पता लगाने में कामयाब हो सकें। Up till here, we read words to know in English, and I have already explained the words to you in Urdu as well. We have already done reading with the paragraph number 1, 2, and 3, and in that paragraph, we come to know that about the variation in temperatures and how humans have developed the ways to protect themselves from the extreme weather. Well, in the next class, we are going to continue with our paragraph number 4, which is hottest and coldest, which is on page number 47. I hope that up till here, the 3 paragraphs which I have explained you is clear to you all. If you have any query regarding these paragraphs, you can ask me in the comment box. See you then. Allah Hafiz.